नमस्ते आत्मनिको भगवतापरं सदसतां सर्वं पदयोगानां सर्वास्मियानमनोरत्नमुपददानां यस्य वाचार्यसर्वा नवसंयत्यान्विदहरन्ति पदमाया तुक्मय मुख्याय प्रेतमावतं विदर्भतं भूय सतनादुपकर्मणा तदहृदया श्रेष्ठा अपन्नार्यः सीजतमोहेते भवतेर्गर्भं भूयतस्य वमर्पितं निसतमरणं सर्वाभवति अन्यवैकसिनत्वसहे इतस्य भगो महाभाव भगवान् सतदुत्तरप्रकटस्थान भूदेवान् प्रणयान्तर्या गिरा ब्रह्मोवाच मानसमे सुधाय सर्वपूर्वजातनकादया जरुदयाय सालोका लोकेषु वेदस्वरा सायकदा भगवतो वैकुण्ठसमरात्मना वैकुण्ठवदनं सर्वलोकनमस्कृतं वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुण्ठपुत्रैतनिमतनिमित्तेन धर्मे राजानन्दं महारीयत्रजातकुमारास्ते भगवान् सत्सुगोचरा सत्कुरुतमयोगजं त्वानां नो प्रलयन्दर्शं यत्र वैदेशं नाम मनन्तां गोविन्दजातेरजनरूप मूढवदव्यमानिकासन्नादृतानि यत्र रायन्ति गोसमदक्षज्ञानदारम् अन्तर्गलेन वैष्णवमाविनां गन्धेन खण्डतद्यो देवपणे पयते जगदानं नन्दिलाम्बरे शर्मणे गुप्तदोषा संलक्षिते सर्वविद्या वैभवी समादेव यतं प्रेमयात्मा पापेषु ददासमा मृताको ज्ञानतां जवने तुलसीशा अभ्यसरे फलकमन्नम समीक्षवत्तं चेतं भगवते ताङ्गयसे यन्नोदनज्ञानवादनन्दे विद्यात्मनामये यातो सुतावहत भदे कविरात सारानां जीवन्त सर्वे सुतमासु हस्तो यदेवतामविजानो मलिन्द्रवन्नाज्ञानं तथा तोषयं जगधर्मं यातो नारायणं भगवतो विक्रमस्य सम्मोहितानि ततो यावतमाय याते यतो पर्यन्तो निवसा वृषभावरित्या दूरे यमाय परिणामस्मरणीयशीला ॐ दर्तुमितो सुविशासनानुवादो नैवेद्यवास्वकलया पदकीकृतमङ्ग नर्विश्वगुरुवन्दभुवनैवं द्यौदिक्यदिवा विचेत्रविमुलाभिमानशोधि आपुपरामुपमुगुरुमुपैकयोगो मायाबलेन मुनयसुतो विकुण्ठं तस्मिन्नतीर्थमुनया सृजतमाना प्रख्यातमानवयसावतवाप्तो सप्तमायां देवावचक्यतप्रहितकलो परालोके विकुण्डलकिरीटविटङ्करेषु मदसुरेषु परमादिकयातिनीतो विन्यास्तया सितचतुर्थयो बाहुमध्ये भक्तं भुवपुरुषलया पुरुषैर्गमाभ्यां धत्ते कणेन च मनाग्रवशं दधानुवार्ये तयोर्निर्विशोर्विशतो गते कृत्वा पूर्वायका परिवर्तमाय सर्वत्र देवमया मया विदृष्टा ये सञ्चरं तभियता शिवरादिसंता ताङ्गी ताङ्गी जीवा ॐ ताङ्गी जीवादर्शना चतुरकुमारान् बन्धान् दशारवयसो कृताङ्कतत्त्वं वेदशास्त्रे तमर्णातो वेदो विहासवल्लभूयशीलो ताभ्यां विशास्वनिषेषु निषिध्यमाना प्रयत्तमायपि हरे प्रतिभाभ्याम् ऊतु स्वत्तमद्रक्षितवङ्गैष रत्नमनुजे कामानुगेन सहसा तवत्ताचा मुनयसु भूमाम्यत्रिमलकर्तरीयो चैतन्यनां निवसतां विमुक्तिशाम स्वभावो तस्मै सङ्गतोरसे गतिविग्रहेवं भोवात्मत्वतयो परिसङ्करीयम् नायं भगवती समासुभोग्यावात्मात्मनिरवो नवसीवतीरा वसन्ति यद्विवयो स्वर्णिर्विनोक्यं विपादितं युधर्वे वयं यतोश्च तत्पाममस्य परमस्य विकुण्ठवतु ततो प्रकाशकं यधीमहि मन्दसीभ्याम् लोकानि को प्रगतमन्तर्वादृष्ट्या पापीयदत्तयैवेरुमोस्तयत्थ तेषामतीतमोभावधार्य तं ब्रह्मदण्डवनिवारणमस्तपूलै ततो हरेरनुग्रहाभुजविद्यतत्पादाद्विभावपतता मतिनाथलेन भूयादभो विभर्वद्वेर्धारिदण्डो यो नो हरेत सुरहेरनुमात्यशेषं मा वो नुतापकलया भगवतस्य
तत्रैव भगवान् अनन्तनामो स्वानामिन्द्रसदते क्रममाय सत्यं तस्मिन् देव परमहंसमुनिना वन्दे समीचरणो सदयं सहस्रैः स्वां स्वागतं प्रतिहतोपैतं स्वकुम्भे ते चक्यताच्च विषयं स्वयमादिनाक्यं हंसशिरोविनयो सुधायुधोदासुभ्रातपत्रससिके सरसीधरं कृष्णप्रसादसुमुखं प्रणीयतामो स्नेहावलोकनयाभिषिकसन्तं श्यामे प्रतापुरसे शोभितया श्रिया स्वचूडामणिसुभगयन्तमिवात्मनिष्यं पीताशुकेतं विनिष्कुरन्तो अनुमालया च बलगोप्रकोष्ठबलयोमृतासुधांसेविनस्तहस्तमित्रेण ददानं विदुर्विपन्तमकरकुण्डलमण्डलाय गण्डसरोन्नसुसुरं मणिमकिरीटं द्योदण्डचण्डविपरे भद्रतापरार्धो हारेण गन्धकरेण पुष्पेण अस्तोत्रकैर्मितिकोशुलिन्दराय स्वाहादया कृष्णं बहुशोस्तभाग्यं मह्यं भवसोतां जोदन्तमन्दोले तस्यारविन्दनयस्य पदारविन्दं गवायो अन्तर्गतसुभविरेणचारतेषां सङ्गमोपशान्तरविन्दुषामपिचेतदन्नो देवाहंसरन्नासनकोशो सुन्दरतराधरसुन्दरमासं लब्धाश्रमवेश्योपदेयमन्त्रीं द्वन्द्वं न कारणमां संसां गतिं मृगतां ययोगमार्गै ज्ञानस्वरं बहुमतं नयनाभिरामम्